हेलो दोस्तों, लास्ट HTML सेशन में मैंने आपको सिखाया था कि व्हाट इज इनलाइन एंड डिस्प्ले ब्लॉक एंड डिस्प्ले इनलाइन। बट अभी मैं आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको CSS थ्रू दिखा दूंगी कि हाउ वी कैन चेंज द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट एंड हाउ वी कैन अलाइन देम इन वन लाइन और मे बी इन द नेक्स्ट लाइन्स. So this is Paint. So just wanted to first clear your concept about display inline, display block, and display inline block. So if we take the example of div is a display block element. So here, if you take any div element, if you include any div element in the document, so example, okay, so I'll consider this as a document. So consider this is our website. This is the document, the container, okay? You can consider like this as a body of the HTML page. Now, inside this HTML page, if I create a div, so what will happen? So once you create a div, it will look like this. So it will take a complete row in the program. So we will label it as a div. So why this is going to happen? Because div is the block level element. It means this is going to take the entire width of your document. And if you create another div just beside it, for example, so what will happen? Again, the another div will display like this. Again, this will be a div. So why it is happening? Because div is having the display block property, and it will not allow the other element or the other div to come just beside it. So it will take the entire screen. So example here, if say we create any div, so it is taking this much of the width of the page. But you can see, in other websites that we have different tickets or different tiles which are aligned side by side. So how we can do that? Can we change the display property of the div? The answer is yes, we can change the display property of the div. So this is all about the div. Now, if example, we take the paragraph, okay? So how paragraph is going to, look when you are going to create a paragraph? So it will look like this. So this is a paragraph. Why paragraph is going to take this much of space? This is a p tag. Because paragraph is also this having the property display block. Now take the example of span. Now how the span will appear. Now this is a span. If you create any span element inside the page, it will take only the width of the content. So example, inside the span, if I write something like this is so it will take only this much of the width and not more than that. Wow, but why? Because span is the inline element. Now, can we change the span to display block or display inline block? The answer is yes. We can change it to display block property, or we can change it to the display inline block property. So depending on the requirement, we can do that. Now, I'll give the real-time example how we are going to do that. So let's open the Notepad++. So this is our last, program. So in the last section, we actually look into these elements, how they're going to appear. So let me show you the output here. So this is how it will look. So we have created a heading tag, that is H1, P tag, and div tag. And you can see that it is taking the entire width of our screen. And as you can say, this is the document, this is the container. And after in the container, these tags are entering like this. So if you can see, there is no width, there is no height. It's just that we have changed the color. I mean, we have the color. So if we change it to green, it will show you the green color. That's it. So now, as I said, that we can change the display property of the elements. Now, take the example of this H1. So can we change this H1 to display inline? The answer is yes. How can we do that? So I'm going to give a class to this element. Say it's
heading class. Okay. And I'm writing the CSS. So how to write the CSS when it is a class? Dot and the class name. Curly bracket open, curly bracket close, and you can write the properties in between these two curly braces, right? Now we want to change the display property. So I'm going to change it to inline. Now refresh. Can see it is taking only that much of it. Whatever the text is written inside this h1 tag. So आप देख रहे हैं it's my first heading, right? So जितना इसका width है उतना ही वो उसका width यहाँ पे लेगा. So this is how you can change the property to display inline. Now इसमें क्या difference है? जैसे ब्लॉक में या inline ब्लॉक में आप उसको width दे सकते हैं. Inline में आप दे सकते हैं क्या? Do you want to see? Let me apply some width to it. So right now I'm giving the width as 500 px and refresh it. See, it's not taking the width. Why? Because this is the inline element. So inline elements जो होते हैं, they don't take the width. अब उसको कितना भी width आप apply करो, वो width नहीं लेंगे. वो उतना ही width लेंगे जितना उसके अंदर के text का width है. Okay. Now I'm going to change it to display block again. Okay. And let's change it to 500 and save it. Refresh. Can you see? जैसे ही आपने इसको display block कर दिया, it started taking the width. So this is the difference. अगर display inline property है, तो वो कभी भी width नहीं लेगा. वो कोई भी element हो, चाहे वो div हो, चाहे वो paragraph हो, और चाहे वो span हो. Okay. Now let me change it to inline block. Let's see the result. It's still taking the width as 500. So the difference is inline doesn't take the width, but inline block and block properties can take the width. So you can assign any width to the elements which are having the property inline block or block. अगर display inline है, वो for example span is by default inline element, उसका जो property है that is display inline, वो कभी भी width नहीं लेगा, वो उतना ही width लेगा जितना उसका text का width है. Okay. Now the other example is paragraph. So let me assign some class to it. Okay. So again, as it's a class, I'm declaring it as .para. Now, paragraph is again by default having the display block property. Now change it to display inline. See the result. Can you see? Now why this paragraph appeared just beside this my first heading element? Because this heading is also having the inline block property and not the block property. So if the element is having inline block or inline, they can appear side by side. The only those elements which are having display property as a block, they will not allow any element to render just beside it. So अगर वो block element है तो वो पूरा का पूरा अपना जगह ले लेगा, एक पूरा block कवर कर लेगा वो document का. बट अगर वो डिस्प्ले इनलाइन है या फिर इनलाइन है तो वो अलाउ कर सकता है दूसरे एलिमेंट को अपने बाजू में रेंडर होने के लिए. दैट्स द रीजन जैसे मैंने इसका प्रॉपर्टी चेंज किया इनलाइन, कैन सी ये इसके बाजू में आ गया जो कि नीचे था. नाउ अगर मैं इसको कर देती हूँ इनलाइन ब्लॉक, सो व्हाट इज द रिजल्ट? सी अगर इनलाइन ब्लॉक या फिर इनलाइन है तो वो दोनों आजू बाजू रेंडर हो सकते हैं. The moment I change it to block, again it will go down. See, in block also I can set the width. So if width is say 300 px and see the result.
So जितना भी आप width दोगे, as it is having the display block property, you can see उसका जो width है 300 इसने show कर रहा है. जैसे मैं इसको inline कर देती हूँ, see what is going to happen. जैसे मैंने इसको inline कर दिया, जो एलिमेंट है उसके बाजू में तो रेंडर हो गया, बट उसका विड्थ देखो, उसका विड्थ उतना ही है जितना टेक्स्ट का विड्थ है. सो दिस इज द डिफरेंस. तीसरा है div. तो div को मैं क्लास दे देती हूँ. We will say it as a div container. You can give any class name, but it should be some मतलब उसका कुछ मतलब होना चाहिए और it should look good. That's it. और कुछ स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करना है. आप कुछ भी उसको नाम नहीं दे सकते. Should give the name as per the course standard only. So again, div is having by default the display block property. Now I'm going to set it with say 500 px. What is going to happen? Can you guess? Yes, it will show the 500 like this. अगर जैसे पैराग्राफ है, हेडिंग है, div है, वो बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक है, तो आपको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक. आपने ये नहीं भी लिखा तो भी वो डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी ले लेता है. इट्स दिस लाइन इज नॉट नीडेड एट ऑल. स्पैन है, स्पैन इज बाय डिफॉल्ट इनलाइन, तो आपको उसको डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं है. बट इफ यू वांट टू चेंज द डिफॉल्ट प्रॉपर्टी टू समथिंग एल्स, यू नीड टू राइट इट. Now I'm going to change it to inline. Display inline and see the result. ये उसने उतना ही विड्थ लिया जितना इसके टेक्स्ट का है. एंड अगेन ये 500 जो हमने विड्थ उसको सेट किया है वो नहीं ले रहा है. बट इफ यू ऑब्जर्व ऑल द दिस ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो हमने कन्वर्ट किए हैं इनलाइन में या फिर इनलाइन ब्लॉक में, दे आर रेंडरिंग साइड बाय साइड, बिकॉज उनका जो डिस्प्ले करने का मतलब तरीका है वही हमने चेंज कर दिया. जो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक था वो हमने चेंज कर दिया इनलाइन ब्लॉक या फिर इनलाइन में. ओके, अभी हम स्पैन एलिमेंट लेते हैं जो अब यहाँ पे नहीं है. वी आर गोइंग टू क्रिएट द न्यू वन. We will give some class to it. Say demo span, and we will write something. This is okay. This is span. और ये जो class है उसको हम कुछ CSS apply करेंगे. But if you want to see before writing the property, I'm just saving it. Let's refresh. So you can see. मैं स्पैन यहाँ पे भी इंक्लूड कर देती हूँ. अगर कलर आपको दिखता है सही से तो अच्छे से समझ में आएगा. Let's change it to red. So can you see? Span is already having the display inline property. That's the reason ये ऊपर इस लाइन में आ गया है. It's not taking the another new line. It is not going to the new line, right? But you can change the display property to display block or display inline. So I'm changing it to inline block. So if I refresh it, it's not going to change because display inline anyways is inline block. It anyways is can render beside the another element. It is going to take the only the width of the that element. Okay, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है इसका width ले लेगा. अगर आप इसको explicitly कुछ width देते हैं तो भी बोलेगा because it's inline block. But the moment I change it to the block, it's going to go to the next line. Okay, so this is the difference. So मैं आपको एक एक्सरसाइज देती हूँ जो आपको बनानी है. आप 3 divs लेके, जैसे मैंने यहाँ पे
पैराग्राफ और हेडिंग लिए है, तो व्हाट यू कैन डू इज, आप ये 3 divs लेके मुझे एक ही लाइन में रेंडर करके आपको दिखाना है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक बता देती हूँ, just discard it. Okay, so what you need to do is, अपना ये वेबसाइट है फॉर एग्जाम्पल, आपका असाइनमेंट ये है कि आपको ये जो div है आपको ऐसे एक लाइन में दिखाना है। कीप some margin। या आप हर कोई वेबसाइट में आप देखते होंगे कि कोई टाइल्स रेंडर हो रहे हैं साइड बाय साइड, और बहुत सारे टाइल्स है आप देखते हो, राइट। यूट्यूब वीडियोस में भी आप देखते हो कि बहुत सारे वीडियोस एक लाइन में आ रहा है। तो ये आपका एक असाइनमेंट है कि आप ये कैसे कर सकते हो। ओके, तो यू कैन ट्राई इट, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी कि इसका सॉल्यूशन क्या है। बिफोर लिविंग मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे ये div कंटेनर है, refresh it। अगर ये div कंटेनर है, मुझे ये निकालना पड़ेगा just not to confuse you guys। अगर मैंने यहाँ से इनलाइन प्रॉपर्टी निकाल दी और मैंने विद भी निकाल दी, मतलब मैंने पूरा ये क्लास ही निकाल दिया, तो क्या होगा? लेट्स रिफ्रेश एंड सी व्हाट इज द रिजल्ट। कैन यू सी माय फर्स्ट div? अभी मैं ये टेक्स्ट भी निकाल देती हूँ। So, हम चेक करेंगे कि वो एलिमेंट ही नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अभी तक आप देख रहे थे इवन दो इट्स अ ब्लॉक एलिमेंट, जो मतलब टेक्स्ट जो था उसमें था, राइट। अब ये बाय डिफॉल्ट ब्लॉक प्रॉपर्टी है। अब कंफ्यूजन नहीं होने के लिए मैं ये सब कुछ निकाल देती हूँ, सो दैट आपको सही से ध्यान में आएगा। यहाँ पे पहले टेक्स्ट था, ओके, रिफ्रेश करती हूँ, अभी आपको दिख रहा है वो पूरा रो कंसिडर कर रहा है और टेक्स्ट दिखा रहा है। अब मैंने यहाँ से टेक्स्ट निकाल दिया, इट मीन्स देयर इज नो डेटा or there is no text inside the div element. So if you can see, it's not rendering at all. But अगर मैं इसको कुछ width देती हूँ, so it's container है, अगर मैं इसको कुछ width देती हूँ तो देखेंगे कि क्या होता है। Let's remove this। इसको width दिया 500 px। Let's refresh it। नहीं दिखा, why? Because there is no height, height is 0। अब मैं इसको हाइट देती कुछ 100 px। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर आप कोई भी इसमें टेक्स्ट नहीं लिखते हो, मतलब इसके अंदर ये ब्लैंक टैग है, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो इट्स नॉट गोइंग टू अपीयर ऑन द स्क्रीन एट ऑल। ओके, बट अगर आपने उसको कुछ हाइट या विड्थ दे दी तो वो स्क्रीन पे अपीयर होगा। अगर आप कोई भी डेटा, कोई भी कुछ भी टेक्स्ट नहीं देते तो उसका हाइट भी 0 है, उसका width भी 0 है, it's not going to render on the screen, though it is having the block level property। So it's a very important thing, though it's having the block level property, it should have the width and height। अब जब आप कोई टेक्स्ट लिख रहे थे तो उसको डिफॉल्ट हाइट और width मिल रहा था, इसीलिए वो अपीयर हो रहा था। बट अगर आप एक्सप्लिसिटली दे रहे हो यहाँ पे, दो देयर इज नो टेक्स्ट इनसाइड इट, बट इट इज गोइंग टू शो यू दैट ब्लॉक लाइक दिस। सो मैंने उसको हाइट एंड विड्थ दे दी, इसलिए वो उतना हाइट और उतना विड्थ लेके आपको रेंडर कर दे रहा है। अगर आप उसको इंस्पेक्ट करते हो
तो मैं नया वीडियो इसके लिए भी बनाऊंगी कि उसको हम HTML एलिमेंट्स को इंस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बटन होती है, सिलेक्ट एन एलिमेंट इन द पेज टू इंस्पेक्ट इट, राइट? दिस इज द टूल टिप on it. Once you hover on it, okay, this is the icon. So you just need to click on it and move on the element. Once you move on the element, you can see this tag, okay? Can see that this element is not having any text, but on the right hand side you can see that this element is having width and the height, okay? Now remove this from here. अभी ना उसको हाइट एंड विड्थ है, ना उसको उसके अंदर कोई टेक्स्ट है. सेव इट. लेट्स सी द रिजल्ट. सी, बट हमने इसको हाइड नहीं किया है. दो इट्स नॉट अपेयरिंग ऑन द पेज, बट इट इज स्टिल देयर इन द DOM. DOM इज द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. हमने जो टैग लिखा है वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है. It is not displaying on the screen because there is not content inside. Content जो है इसके अंदर नहीं है या फिर डेटा नहीं है, और उसको height and width. If you see on the right hand side, there is no height and width. Okay, that's the reason it is not appearing here. Okay, so this is what is about div element, paragraph and headings. मैंने आपको एक assignment दी है जिसमें आपको ये जो है side by side दिखाने हैं. I think let me show you here only instead of creating a new video. So मैं आपको इधर ही दिखा देती हूँ. अभी ये div कंटेनर है, इसको रेप्लिकेट कर देती हूँ. ओके, आप ये वीडियो पॉज करके आप अपने सिस्टम में पहले इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बाद में ये वीडियो देख सकते हैं, ये सॉल्यूशन देख सकता है, सो दैट आपको पता चल जाएगा. ओके, सो मैंने क्लास तो दे दी है, बट इसके अंदर कंटेंट नहीं है. तो लेट मी राइट द कंटेंट हियर. दिस इज div 1. This is div 3. तो ऐसे हमारे 3 divs है. यू कैन सी आपको तो आउटपुट अब इमेजिन हो गया होगा कि कैसे दिखेगा div. इट विल बी इन लाइन, मतलब हमने उसको कुछ मार्जिन नहीं दी है इसलिए आपको वैसा दिख रहा है, बट दे आर इन द नेक्स्ट लाइन एक्चुअली, और वो मर्ज हो रहा है कलर के साथ. बट ये जो 3 divs है ये साइड बाय साइड नहीं आए हैं, ये एक के नीचे का है, बिकॉज इट इज हैविंग द डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट. अब हम क्या करेंगे, ये जो क्लास है अभी जैसे हमको ये जो divs है उनको सेम ही साथ में मतलब ये करना है, उसका स्टाइल लिखना है, तो मैं एक ही क्लास देती हूँ, उसको अलग अलग क्लास नहीं देती. उसका रीजन आपको पता चल जाएगा कि ऐसे मैं क्यों कर रही हूँ. व्हाई आई एम नॉट गिविंग द डिफरेंट क्लासेस. ओके, इसका हम कुछ बैकग्राउंड सेट करते हैं. सो रेड, और हम इसको कुछ विड्थ एंड हाइट दे देते हैं. So let me give you 500 px. px लिखना बहुत जरूरी है. Say 600 px. करते हो तो ये एक के नीचे एक दिखेगा, यू कैन सी. ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा तो नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट तो ऐसा चाहिए. सो मैं क्या करूँगी, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू चेंज द डिस्प्ले प्रॉपर्टी. अब आप मुझे बताया यहाँ पे मैंने इनलाइन लिखना चाहिए या इनलाइन ब्लॉक लिखना चाहिए. जैसे मैंने आपको बताया कि इनलाइन प्रॉपर्टी हाइट वेट लेती नहीं है, सो आई नीड टू राइट इनलाइन ब्लॉक because I have assigned some height and width to it, right? मुझे ये रिजल्ट चाहिए, इसलिए अगर मैं ऐसा कर देती हूँ तो यू कैन सी एक div तो आ गया है ऊपर. अब ये div क्यों नहीं है, बिकॉज जो भी हमने विड्थ दी है उसको, ये उसको फिट नहीं करे, क्योंकि 500 500 500 तो 1500 हो गया, तो वो अपने स्क्रीन में नहीं फिट हो रहा है. दैट्स द रीजन अनदर div इज गोइंग डाउन. सो हमको क्या करना है, इसका जो विड्थ है हमको ऐसा कुछ सेट करना है सो दैट जो नीचे वाला जो div है वो ऊपर आ जाए. अब देखो ये थोड़ा सा कम हो गया, मैं थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ. 400.
अब मैं क्या करूँगी, इसमें आप कैन सी थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, सम स्पेस बिटवीन दिस div, राइट? मुझे थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए, सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू इज, मैं थोड़ा मार्जिन सेट करूँगी। अब मुझे मार्जिन कैसे सेट करना है, मुझे लेफ्ट से करना है या राइट से करना है? तो आई एम गोइंग टू सेट फ्रॉम राइट, तो मार्जिन लेफ्ट, margin left, I'm setting 20 px. थोड़ा सा ज्यादा सेट कर देती हूँ, इसका वेट मैं थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ और 500 कर दे, सॉरी 450 कर देते हैं हम इसको, 450 और 40, पता है। ये सब एडिट आप इसमें ब्राउजर में भी कर सकते हो, तो आपको इजी जाएगा, instead of going again and again to the browser, sorry, editor. What you can do is यहाँ पे जाके आप इसको इंस्पेक्ट करके आप यहाँ पे सेट, अभी अपना क्लास जो है यहाँ पे अपीयर हो रहा है, तो आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। ऐसे जैसे अभी मुझे लग रहा है कि हाइट में थोड़ा सा कम कर देती हूँ, तो मैं बोलूँगी इसको कि चलो 550 कर देते हैं हम, ओके। अगर मैं 550 करती हूँ तो अभी यहाँ पे हमको चेंज दिख जाएगा, यू कैन सी उसका हाइट मैंने चेंज कर दिया है। मुझे ऐसा लगा कि नहीं 550 भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं मुझे समझ गया कि 550 में रिजल्ट क्या आ रहा है, तो मैं उसको 500 कर दूंगी। Refresh, see the result. So this is how we can you can change the property of the elements. डिस्प्ले से आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी जैसे इनलाइन से आप इनलाइन ब्लॉक कर सकते हो, इनलाइन से आप ब्लॉक कर सकते हो, ब्लॉक से इनलाइन कर सकते हो, फिर ब्लॉक से इनलाइन ब्लॉक कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन डू। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं। आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए ऑब्वियसली मैं कुछ अच्छे से एग्जाम्पल और प्रिपेयर करूँगी, सो दैट आपका कंफ्यूजन दूर हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारे वीडियोस डालने वाली हूँ जिसमें आपके बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं, चाहे वो CSS रिलेटेड हो, HTML रिलेटेड हो, वो क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।